Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS Boy. Okay students, previous class पढ़ी आमे moving coil galvanometer तो principle पढ़ाई थिला, then construction, then तुम theory पढ़ाई थिला. Okay students, so आज हमें देखिबा एक new topic कहारो moving coil galvanometer new topic that is working. Okay, moving coil galvanometer that is working. Okay, लिखि देछि already मु तो first point कोन देखो working रो तो केमिति काम करिवो के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके देखो द टॉर्सन हेड जो माने प्रीवियस वीडियो देखिनो से माने देखि दियो सेटे सब ऑलरेडी डिस्कस म कर देछि. द टॉर्सन हेड इज सेट माने टॉर्सन हेड को मैं सेट करि छे. द टॉर्सन हेड इज सेट सो दैट द कॉइल कॉइल माने कोन लूप जो रेक्टेंगुलर लूप थिले बा क्लोज्ड लूप कहि पारो. द टॉर्सन हेड इज सेट सो दैट द कॉइल हैंग्स फ्रीली माने फ्रीली झुलिबो के कॉइलटा फ्रीली झुलिबो. देखो द कॉइल हैंग्स फ्रीली विदाउट टचिंग द पोल्स और द सॉफ्ट आयरन कोर माने कोन बुझलो तो टॉर्सन हेड को एमती सेट रे झुला जाई छी बा टॉर्सन हेड कोन लागि छी टॉर्सन हेड रे तमर कॉइल लागि छी कॉइल को एमती हिसाब रे झुला जाई छी जेमिति कोन से टच करिवनी काहा को टच करिवनी विदाउट टचिंग द पोल्स. पोल्स माने कोन मैग्नेटर नॉर्थ पोल साउथ पोल एडी टू पोल्स जानि छ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विदाउट टचिंग द पोल्स और द सॉफ्ट आयरन कोर माने से पोल्स को भी टच करिवनी के कॉइलटा आउ सॉफ्ट आयरन कोर को भी टच करिवनी माने से आराम से बुली पारिबो कॉइलटा बा फ्रीली झुली पारिबो. देखो द टॉर्सन हेड इज सेट सो दैट द कॉइल हैंग्स फ्रीली विदाउट टचिंग द पोल्स और द सॉफ्ट आयरन कोर. ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट नंबर 2 द करंट टू बी मेजर्ड हम करंट मेजर करबा. द करंट टू बी मेजर्ड इज नाउ पास थ्रू द टर्मिनल ए एंड बी जो ए और बी थ्रू ए और बी टर्मिनल को जो करंट फ्लो हेबो से करंट हम कोन मेजरमेंट करबा. ओके द करंट टू बी मेजर्ड इज नाउ पास थ्रू द टर्मिनल ए एंड बी ए और बी को जो करंट जीवो सेटा हम कोन मेजरमेंट करबा. ओके मेजरमेंट करा जाई परिबो. नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट it will be observed that हम देखि परिबा it will be observed that the coil gets deflected माने coil टा कोन हबो देखो coil अछि तो deflect हबो देखो माने घुरिबो deflect. ओके it will be observed that the coil gets deflected how deflected the deflection can be measured by lamp and scale arrangement को arrangement मपा जाई परिबो deflection को lamp and scale arrangement. ओके देखो को यूनिट रे को arrangement रे lamp and scale arrangement यूनिट रे मपा जाई परिबो lamp and scale arrangement. ओके जो डिफ्लेक्शन है वो जो कॉइल टा को arrangement मपा जाई परिबो दैट इज lamp and scale arrangement मपा जाई परिबो. ओके देखो it will be observed that the coil gets deflected the deflection can be measured by lamp and scale arrangement. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा मेरिट्स ऑफ मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर. मेरिट्स देखिबा मेरिट्स. ओके मेरिट्स then demerits asibo. Okay so first we have to see merits of moving coil galvanometer. heading दे दियो समझते that is merits. okay the first point कोन हबो देखो नेक्स्ट हम देखियो मेरिट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट कहारो मेरिट्स मूविंग कॉइल galvanometer मेरिट्स देखो माने उपकार मेरिट्स. ओके एटी कोन उपकार हबो मेरिट्स it is a highly sensitive instrument के moving coil galvanometer is a highly sensitive instrument. okay से कोन करिवो and hence can be used to measure very small current. okay एटा काम कोन what is the function of moving coil galvanometer the function है कोन used to measure very small current से कोन मेजर करि परबो small current से मेजरमेंट करि परबो के moving coil galvanometer. okay it is a highly sensitive instrument and hence can be used to measure very small current के मापिबो moving coil galvanometer. okay students next number 2 merits देखिबा. number 2 point since electric current is proportional to deflection मतलब previous video रे अछि since electric current is proportional to deflection a linear scale can be used for measurement. देखो जेहेतु electric current is proportional to deflection ता माने कोन गोटे linear scale बम normal scale लागिवो कोन पई measurement करि पाइबे. देखो a linear scale can be used for measurement हम इजीली measurement करि परिबा कोन deflection. देखो since electric current is proportional to deflection a linear scale can be used for measurement करि परिबा linear scale. next demerits माने उपकार माने उपकारिता जो demerits. okay demerits उपकार देन उपकार demerits माने कोन it does not give direct reading के moving coil galvanometer does not give direct reading दे पारिबो direct reading दे पारिबोनी it does not give direct reading. okay we have to make a lot of adjustment to use this galvanometer. हमें galvanometer यूज करबे को हेले हमें कोन करिबा a lot of adjustment we have to take. I mean adjustment करिबा देखम adjustment करिबा
it does not give direct reading, we have to make a lot of adjustment to use this galvanometer. এটা হল ডিমেরিটস লা দেখো নেক্সট it is not portable. what is the meaning of portable? মানে গুটে জায়গাକୁ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପାରିବାନି ଓକେ সো এটা হল ডিমেরিটস দেখো it is not portable মনে হলা দুইটা পয়েন্ট দেখো it does not give direct reading, we have to make a lot of adjustment to use this galvanometer. next number 2 it is not portable. okay students next আমি দেখিবা sensitivity of a moving coil galvanometer. sensitivity next heading দিও समझते sensitivity of a galvanometer. sensitivity দেখো next point sensitivity of a galvanometer. in syllabus तुम दुईटा sensitivity আছে দেখো in physics रे plus 2 second year physics sensitivity of a galvanometer. so মনে রাখো number 1 that is what? current sensitivity. first point খুঁজি দেখো two types, one is current sensitivity, another is voltage sensitivity. okay, what is current sensitivity? what is the definition? that is current sensitivity of a galvanometer is defined as the minimum current. देखो minimum current required to produce a deflection. देखो produce a deflection. मन रहिला what is current sensitivity? current sensitivity of a galvanometer is defined as the minimum current. मान कौन current लागिबो? minimum current required to produce a deflection. okay students देखो current sensitivity of a galvanometer is defined as the minimum current required to produce a deflection. suppose कोन हबो देखो if theta is the deflection produced, theta is the कोन theta माने होची deflection produced of the coil due to current I. देखो due to current I. if theta is the deflection produced of the coil due to current I, then what is the formula of current sensitivity? देखो what is the formula of current sensitivity? formula कोन SI symbol होची SI. देखो SI is equal to जीवो current by deflection I by theta. देखो इटा होची this is called what? SI माने होची that is what? current sensitivity. clear students? देखो okay SI माने कोन that is current by deflection. theta माने जो deflection, I माने होची current, that is current by कोन that is deflection. okay this is all about current sensitivity. okay students next हमें देखिबा number 2 voltage sensitivity. next voltage number 2 voltage sensitivity. what is called voltage sensitivity? देखो definition लिखी दो that is voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced by defined as the minimum voltage required to defined as the minimum voltage required to produce a unit deflection. unit deflection. okay this is the definition. voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the minimum voltage. कौन लगे minimum voltage? minimum voltage required to produce a unit deflection. देखो if suppose V is the potential difference and theta is the deflection.
थीटा इज द कौन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस then what is the formula of voltage sensitivity symbol टा होची देखो SB सेटा साइड प्लेट होची SB तो what is the formula of SB is equal to have देखो that is V by theta V माने जो पोटेंशियल डिफरेंस V माने हो जो वोल्टेज भी कहि पारा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बाय व्हाट बाय डिफ्लेक्शन ओके स्टूडेंट्स देखो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिफ्लेक्शन कौन डेफिनेशन voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the minimum voltage required to produce a unit deflection. Okay, students. If V is the potential difference and theta is the deflection produced, then SB the formula कौन SB माना होती symbol of voltage sensitivity. SB is equal to formula कौन V by theta. Voltage और potential difference by deflection. Okay, students. This is all about voltage sensitivity. Okay, students. Next class से पढ़ीबा हमें conversion of galvanometer into ammeter next पढ़ीबा then आउ गोटे पढ़ीबा conversion of galvanometer into voltmeter syllabus रे अछि एला यूनिट से सरी जीवो ओके स्टूडेंट्स ओके जदी ए क्लास वीडियो भल लागुछि माने काइंडली सब्सक्राइब कर दियो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और पक्कर थियो बेल आइकन को दबाइ दियो ओके स्टूडेंट्स जदी वीडियो भल लागुछि माने काइंडली समस्त को शेयर कर दियो ओके स्टूडेंट्स